dynasty, and very first king was Sher Shah Suri, who started Dak Pratha. In those days, the letters or messages were used to be sent from one part of the country to another part of the country by the horse riders. They used to they used to use their horses, and in several phases, one could send and receive the messages. Before that, some traditional stories are there, fancy stories you can say. It was the pigeon who started the sending and receiving messages. In those days, we used to pet. Still, we are fond of pigeons, and they were very trained pigeons. They used to sit on your terrace, and you get the message from other ways. You might have seen uh, some clips of that in the film. Uh, and after that, formal mail started in British period. Then it was coded. You might have seen PIN code. What is that? Postal index number. And all the postal areas were coded into different, what to say, digits. Thereafter came telegram. We still remember in those days it was very difficult to send and receive messages because it was very costly. And you must have seen some joke on uh, telegrams in the cinema that just write a sentence and spend such money. Just write few words, and still I remembered in those days we used to use a very guarded and multi meaningful sentences like mother sick come soon, father alarming please come soon, please you we should have omitted, because they used to count the words which you want to say. Thereafter, speed post is still going on, and now it is matter of electronics mailing, which is called email. Now the question starts that what is the meaning of etiquettes? Do you know what is the meaning of etiquettes? No, sir, I'm not. I don't know, sir. Aradhana, do you know what is the meaning of etiquettes? Uh, Sir, in Hindi we call it Shishtachar. No. Uh, etiquettes means in Hindi very simply it is taur tarika. You might have seen he does not know etiquette. You don't know etiquette. Means there are certain norms which we all follow and call it the decent way. Likewise, whenever you are sending So any good message, manners. you must So good manners. you must have Ashish. Do you want to say something? No. सर एटिकेट से मतलब गुड मैनर्स हो सकता है. Well, I'm not listening your voice clearly. So please Sir, he is help saying me. that What etiquette exactly you want to know? Rudra, etiquette means what good is manners. happening with him? Sir, he is saying that etiquette means good manners. I'm not getting your clear voice. Uh, it is in echo. Okay. Are you listening me well? Should I continue? Yes, sir. Okay. Etiquette is the way by which we have to live in the society. We have to proceed something with the society. And these are the framed laws by a civilized, established society which follow it. If we talk about etiquette, we expect that we need to perform certain formalities which is very much relevant or very much acceptable
and you can say very much essential for us. Anyway, now first of all, I want to say something about the email. Thereafter, I will go through the etiquettes. Do you agree, Ankit? Do you agree? Ankit, are you listening me? Yes, sir. अंकित, Yes, sir. मैं चाहता हूं थोड़ा सा ईमेल के बारे में दो चार लाइन लिख लें, पढ़ लें या जान लें, फिर हम लोग एटिकेट्स जानेंगे. Okay, sir. डू यू एग्री? Yes, sir. Okay, please start. Email refers to messages sent over computer and includes everything from casual notes to friends to multimedia presentation Yeah, guilty. sent across the world. Shekhar Rai, did you understand this matter? Yes, sir. Okay. Change the paragraph. Till 1970 century, till 1970 century, email was called computer messaging systems, CBMS. Full stop. It was in 1974 that Western Union first registered the trademark electronic, electronic mail, E-MAIL, email. Did you understand, Monu? आपने इस बात को समझा? Yes, sir. Should I go ahead? Change the paragraph. Email refers to communications transmitted through computers. Full stop. Email helps us to send a message to a person comma without our making a direct contact or even knowing
where that person is, where that person is. The subscribers to electronic mail services are called users. Please stop. A user you can access messages. Okay. Once again, I'm reading that particular passage. Email refers to communications transmitted through computers. Email helps us to send a message to a person without our making a direct contact or even knowing where that person is. The subscribers to the electronic mail services are called users. A user you can access messages on your system from home, office, hotel, or anywhere you happen to be. Uh, Ashish, did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Acha. Then we should go on the another very important point, basic components of email. Basic components of email. Several basic components of email are number one users, number two messages, number three addresses of senders and recipients number 4 protocols, number 5 messaging transports, number 1 2 3 6, sir. 4 5, number 6 anyway, number 6 gateways, number 7 value added networks, and directory systems, Rudra Pratap Singh,
Did you understand? Yes, sir. इस बात को आपने समझा? These are the etiquettes. इसी प्रोटोकॉल को एटिकेट कहेंगे, जिसको मैंने 1 by 1 कोशिश किया समझाने की. Thank you. You understood. Now I should explain each and every terms one by one. Number 1, users. Users are number 1. Users are generally people. Generally people. But users can also be. But users can also be other computer application programs. Other computer application programs. Full stop. A message is actual information sent by one user to another. One user to another. Full stop. Part of email information included in a message. Part of email information included in a message is the address of both. Is Sir, the address of included both. के बाद Included in a message is the addresses of both the sender and receiver which include their unique identification codes. Along with another identifier such as email system. That is the mailbox number or the organization Each mail system uses a protocol that describes the structure of the message and subject followed by the body which includes text, images, graphics, etc. etc. आशीष, इस बात को समझा आपने? yes sir. These are the etiquettes. ये etiquettes ही है जो अलग भाषा में मैं बता रहा हूँ.
Ashish, did you understand? अंकित, सर आपने समझा? आशीष, सर अच्छे से नहीं समझ। अच्छा, मैं हिंदी में कोशिश करता हूँ समझाने की। ओके, हमने लिखाया है कि कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो ईमेल में यूज किए जाते हैं। कई तरह के कंपोनेंट्स हैं जो ईमेल में यूज किए जाते हैं, बिकॉज कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड हैज ऑलवेज बीन ए चेंजिंग वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि हम लोग जावा और पता नहीं किस लैंग्वेज से स्टार्ट किया, फिर सी में आए, C++ में आए, Oracle में आए, आई डोंट नो, आपका फील्ड है, यू बेटर नो, बट इट इज चेंजेबल, वेरिएबल एंड इम्प्रूवेबल। इन ऑल केसेस वी सी दैट इट इम्प्रूव्स डे बाय डे, बट कुछ बेसिक कंपोनेंट्स उसके हैं जिसे हमें जानना होगा। जैसे यूजर्स एक वर्ड होता है, मैसेजेस होता है, एड्रेस ऑफ सेंडर्स एंड रिसिपिएंट्स होता है, प्रोटोकॉल होता है जिसे हम एटिकेट्स भी कह सकते हैं, मैसेजिंग ट्रांसपोर्ट्स होता है, गेटवेज होते हैं, वैल्यू एडेड नेटवर्क्स होते हैं और डायरेक्टरी सिस्टम। आइए हम वन बाय वन इसको जानने की कोशिश करें। यूजर्स है कौन? यूजर्स आमतौर पर वही लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी यूजर्स आपका कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। आप ईमेल खोल कर देखें, कई कंप्यूटर और कई प्रोग्राम्स आपको मैसेजेस सेंड करते हैं। एक मैसेज जो है वही एक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसे भेजने वाला एक है और वो दूसरे को भेजना चाहता है। अब इसी में यह समझ ले कि इसका जो ईमेल का हिस्सा है उसी में मैसेज भी इंक्लूड होता है और उसी को हम मैसेज कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये मैसेज जो डाकिया उस समय सस्ते के तौर पर आई थिंक 25 पैसे या 1 रुपए में ड्रॉप कर, उसमें सिर्फ एड्रेस टू द सेंडर्स होता था। रिसीवर्स के लिए आपका मन हो तो लेफ्ट साइड में दे, अदरवाइज पूरा का पूरा लेटर लोग ड्रॉप। बाद के दिनों में भी अक्सर देखा गया कि लोग भेजने वाले को जिसको जाना है उसका तो एड्रेस देते थे, लेकिन अपना एड्रेस नहीं देते थे। लेकिन ऐसा किसी भी हालत में ईमेल में नहीं हो सकता, इसमें दोनों का एड्रेस होगा, सेंडर का भी, रिसीवर का भी, और ये किसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड से बंधा होता है। और आप ऐसे कह सकते हैं कि ये आइडेंटिफायर जो ईमेल का है वो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में डालता है। आप उसे मेल बॉक्स कहें, ऑर्गेनाइजेशन कहें या जो कुछ। जस्ट एज्यूम कि मुझे आप कुछ भेजना चाहते हैं, तो यू कैन नॉट unless and until you know that my email ID is drjamalsami@gmail.com। फिर एक सवाल आएगा कि मैंने गैप दिया है, नहीं दिया है, स्मॉल में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशंस मेरे हैं, उसी से आप सेंड कर सकेंगे। वो नहीं मैच करेगा, नहीं जाएगा। और हर ईमेल सिस्टम का अपना एक विशेष अधिकार होता है जिसे हम प्रोटोकॉल कहें, जो बताता है कि जो मैसेज है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आमतौर पर इसके तौर पर आप कह सकते हैं टू जरूर होगा, फ्रॉम जरूर होगा, सब्जेक्ट जरूर होगा, और सब्जेक्ट बहुत वास्ट होगा। कल वाला मामला नहीं है, हम मजबूर है कि सर्टेन ही बात लिख सकते हैं। आज हम पूरा पूरा टेक्स्ट ईमेल कर सकते हैं, आज हम कई ईमेल इमेजेस ईमेल कर सकते हैं, कितनी ग्राफिक्स इंप्रूव करके कर सकते हैं। तो डेज आर गॉन जब हम एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जी रहे थे। नाउ वी कैन सेंड एंड रिसीव सेवरल अदर। एनीवे, should I go ahead? Users of Yes, sir. email. Okay, I'm going ahead. Users of email. The main users of email are
The main users of email are number one, it combines characteristics of writing. It combines characteristics of writing and speaking. And speaking. Email combines some of the features of writing and speaking. As a user, you can communicate directly to your receiver along with advantages of being able to compose and revise a written message. Email saves time in printing, copying and distributing your messages. We can use email to send and receive faxes and telefaxes. We can reach groups as well as individuals and share files of data, comma, spreadsheets, video, music, and store anything on your computers. Computer programs themselves can use email to monitor such things as inventory levels and communicate to a person or another computer the required information. प्रशांत, इस बात को समझा आपने? प्रशांत,
Did you understand? Okay. Point number 2. Useful in personal communication. Useful in personal communication. Email is email is also useful in personal communication. In personal communication. Re- We communicate we communicate with our friends with our friends and family anywhere anywhere in the world in the world. Thus, thus we can keep in touch. We can keep in touch with our friends, with our friends and family anywhere, anywhere in the world, in the world without having, without having to make an appointment, to make an appointment or a telephonic call, or a telephonic call. Aradhana, did you understand this matter? Yes, sir, almost. Almost. इसी को आप ध्यान से पढ़ लेंगी because it is something very technical and I think you can go through that better and much better than me because it is related to your topic that what should be the etiquettes that should be formally adopted, accepted, or what to say, taken in view while communicating on emails. Did you understand? Yes, sir, yes, इस sir. क्वेश्चन को मैं फिर से हिंदी में बता रहा हूँ आराधना कि व्हाट आर ईमेल एटिकेट्स. ईमेल के कौन कौन से तौर तरीके हैं, शिष्टाचार हैं, अच्छी भाषा में कहा जाए तो वो सारा तरीका है दैट शुड बी फॉलोड, जिसे अपनाया जाना चाहिए, जिसे ध्यान में रखना चाहिए, जिसका पीछा करना चाहिए, जिसे समझना चाहिए इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक कम्युनिकेशन में. मैंने सारी बातें प्रोटोकॉल की शक्ल में लिखा दी हैं, आप अपने से इसको लिख लें. इफ यू फील, because your time is getting up, if you feel any problem, I am there. क्या नहीं? आशीष, आशीष, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ गई? Yes, sir. क्वेश्चन समझ गए? व्हाट आर ईमेल एटिकेट्स, ईमेल की शिष्टाचार क्या है, औपचारिकताएं क्या है, तौर तरीके क्या है, दैट शुड बी फॉलोड, जिन्हें अपनाया जाना चाहिए, जिनका अनुसरण करना चाहिए, जिनको दिमाग में लेकर चलना चाहिए. कब? इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब हम औपचारिक पत्रचार करते हो, कम्युनिकेशन करते हो तो. आई थिंक यू कैन राइट इट वेल. मैंने लगभग लिखा दिया है कौन कौन से तौर तरीके हैं जिनका ध्यान रखना होगा. थैंक यू वेरी मच. इन नेक्स्ट क्लास वी विल appear with a fresh topic, and if you feel that this is not sufficient, we can go into the another details of that, which is I think not necessary for the technical school. So far you are very familiar about the procedures, formalities, etiquettes, manners of email. Day by day, every day you
receive several messages. Every day you send several messages. You can write your own. But I have given sufficient tips to you. Thank you very much. Should I quit Thank the you, sir. class? Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.